رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बात से। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कुरान पाक की एक आयत जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। और आज के लिए जो हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके गुनाह इसके सर और कांधों पर रख दिए जाते हैं। जब जब वो रुकू और सजदे में जाता है तो वो गुनाह गिरते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वक्त पे नमाज जो है उसको अदा करें, ताकि जितने भी हमसे रोज़ाना की बुनियाद पे छोटे बड़े गुनाह होते रहते हैं हम उनसे अपने आप को बचा सकें। आज के लिए एक दुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो दुआ कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ओ अल्लाह प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हेल फायर। सो ये दुआ हमें सुबह शाम जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। Today is the lecture number 7 of the unit 2, that is vectors and equilibrium, and in the today's lecture we will learn about the equilibrium, the types of equilibrium and the conditions of equilibrium. This lecture is quite interesting and it is very important from the board point of view. So please make sure कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच देयर इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर हम कहते हैं कि नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नेट फोर्स का मतलब है कि जो सम ऑफ फोर्सेस हैं अगर वो जीरो हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, फोर्सेस एक्ट कर रही हो, लेकिन उन फोर्सेस का जो सम है, जो कलेक्टिव इफेक्ट है उन फोर्सेस का, अगर वो जीरो हो जाए तो हम ऐसी बॉडी को जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 3 स्टेट्स देख सकते हो जिनमें बॉडीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जो एग्जिस्ट कर रही हैं। फर्स्ट वन जो है यहाँ पे ये बॉटल जो है, फ्लास्क जो है, दैट इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर हम इसको स्लाइड टिल्ट करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जो सेकंड कंडीशन है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर यहाँ से हमने इसको स्लाइटली भी टिल्ट कर दिया तो ये अपनी जो शेप है, अपनी पोजीशन जो है वो उसको मेंटेन नहीं रख सकेगी, बल्कि वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेगी। और जो थर्ड स्टेट है दैट इज द स्टेट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इस बॉटल को रोटेट करोगे, इसको मूव करोगे, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है इस बॉडी में वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इफ the body come back to its original position, then we can say that the body is in the stable equilibrium. If it is unable to return back to its original position, then the body is in unstable equilibrium. And if the equilibrium at any point of the displacement does not change, then the body is said to be in the neutral equilibrium. So ये तो हमारे पास 3 जनरल टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, जिनमें हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं बॉडी की उनको हम डिस्कस करते हैं। So as a result, the body is said to be in equilibrium if under the action of the several forces acting together and there is no change in the translational motion as well as its rotational motion. अब इस स्टेटमेंट में 2 वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। इनको भी हम स्टडी करते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, a body is said to be in the translational equilibrium, in the translational motion if it moves along a straight line without rotation. अगर बॉडी रोटेशन किए बगैर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे
मूवमेंट को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और रोटेशनल मोशन हमारे पास क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग the axis of rotation, it spins basically, then we can say that the body is in rotational motion. So हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? कि अगर इन बॉडीज के ऊपर जो है वो सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रही हो, लेकिन उनकी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में चेंज ना आए। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ बॉडीज जो रेस्ट पे हैं वो ही इक्विलिब्रियम में होंगी, जो बॉडी मूव कर रही हैं वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि उनके ऊपर जो चेंज है मोशन का वो ना हो, मीन्स acceleration produce नहीं होना चाहिए। So if the acceleration of the body is 0, then the body is said to be in equilibrium. और acceleration 0 होने का मतलब है that there is no change in its velocity. अगर velocity का change नहीं होगा तो acceleration automatically जो है वो 0 हो जाएगा, और acceleration 0 होने का मतलब है there is no net force acting on a body, and then we can say that the body is present in equilibrium state, and the study of the objects in equilibrium is known as the statics. So it is basically the branch of physics in which we study about the objects that is present in equilibrium state. So the equilibrium is whenever the body is present at rest or it is moving with a constant velocity, then we say that the body is present in equilibrium. There are two types of the equilibrium. First of all, the static equilibrium, and the second type is the dynamic equilibrium. Further, the dynamic equilibrium is divided into the two branches: the dynamic translational equilibrium and the dynamic rotational equilibrium. And now we will see one by one what are these types of equilibrium. So first of all, a body is said to be in static equilibrium if the body is not moving. It means the net force is 0 and also the acceleration is 0, and also the body is not moving. It means its velocity is 0. अगर body rest पे है तो ऐसे systems को जो है वो हम static equilibrium की state में कहते हैं। लेकिन अगर body move कर रही है और उसमें जो acceleration है वो 0 है, there is no change in the velocity, it means net force acting on the system is 0, then the body is said to be in the dynamic equilibrium. Although it is moving, but since there is no acceleration produced in the system, then we can say that this body is in dynamic equilibrium. और अगर body जो है वो rest पे होगी तब हम उसको static equilibrium में कहेंगे. So a body at rest is said to be in the state of static equilibrium. For example, if the book is resting on the table, then it is present in the state of the static equilibrium, because in this case, the two forces are acting on the book. The one, the weight of the book, which is acting in the downward direction due to the gravity. The second force acting on the book is the reaction force of the table, which is acting in the upward direction. So these two forces are equal in magnitude but opposite in direction, due to which the net force acting on the book is 0, and hence the body is present in the static equilibrium. Also, a bulb hanging from a ceiling, again its weight is acting in the downward direction, but the reaction force is in the upward direction, or you can say that the reaction force is the tension created in the string, which is in the upward direction. So the upward and the downward forces are balanced, they are 0. That's why the bulb hanging from a ceiling is also an example of the static equilibrium. Now, what is the dynamic equilibrium? A body that is moving with the uniform velocity, that is said to be in the state of the dynamic equilibrium. And the dynamic translational equilibrium is a state of a body in which the body is moving with a constant velocity in a straight line. So if a body is moving in a straight line with a constant velocity, then the body is said to be in the dynamic translational equilibrium. For example, the paratrooper falling down with a constant velocity is in a state of the dynamic translational equilibrium, even though the paratrooper is moving, but since the velocity of the paratrooper is constant, so there is no acceleration produced
on the paratrooper, and hence his movement is in the dynamic translational equilibrium state. So the paratrooper falling down with a constant velocity is in the dynamic translational equilibrium state. The dynamic rotational equilibrium is the state of a body in which the body is rotating at constant angular speed about a fixed axis. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होगी जब वो फिक्स एक्सिस के अलोंग अगर वो रोटेट कर रही हो. इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट अगर वो रोटेट कर रही है किसी भी फिक्स एक्सिस के अलोंग, तब हम ऐसी बॉडीज को जो है वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट में कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ व्हील rotating along the fixed axis, a disc is also rotating along the fixed axis, or the grinding stone that is rotating about its axis with a constant angular speed is an example of the dynamic rotational equilibrium. So dear students, there is a question: in which state this clock is present? Either it is in a state of static equilibrium, or it is in a state of dynamic equilibrium, or it is present in the both states. So yes, the clock itself is present in the state of the static equilibrium, but the needle of the clock is in a state of dynamic rotational equilibrium, because the needle of the clock is rotating about the fixed axis while the clock itself is present at rest. So the clock is in a state of the static equilibrium while its needle is in the state of dynamic rotational equilibrium. Now the second topic of the today's lecture is the conditions of the equilibrium. So for a body to be in the perfect equilibrium, there are the two conditions which are necessary to be satisfied. Otherwise, we cannot say a body to be present in a state of the perfect equilibrium. So body को perfect equilibrium state में exist करने के लिए दो कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम उस सिस्टम को या उस बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं कह सकेंगे. सो आइए देखते हैं कि वो दो कंडीशंस क्या हैं. First of all, the first condition of the equilibrium, and according to the first condition of the equilibrium, the vector sum of all the forces acting on a body must be equal to 0. As you can see in this figure, there is a stationary person who is standing on the ground. So his weight is acting in the downward direction while the normal reaction force of the earth on this person will be in the upward direction. So these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So as a result, if you find out the net force, if you add these two forces, since these two vectors are equal in magnitude but opposite in direction, so their resultant will be equal to 0. So the net force is 0, due to which the person will be said to be in a state of equilibrium. So according to the first condition of equilibrium, the sum of all the forces acting on a body must be equal to 0. And in case of the coplanar forces that are acting on a body, the coplanar forces are the forces which act in the plane, just like in the XY plane, the YZ plane or ZX plane. So ऐसी forces जो कि plane में act करें किसी भी body के ऊपर, so उस case में हम first condition को जो है वो split कर सकते हैं in terms of the axis, just like the sum of forces acting along the x-axis must be equal to 0, and also the sum of all the forces that act along the y-axis must be equal to 0. Just like, as you can see in this figure, the two forces are acting on a body in the upward direction while making an angle of 30 degree and the 45 degree. So in this case, you have to split these two forces in the x and the y components, and then you will check either the sum of forces along the x-axis and the sum of forces along the y-axis are 0 or not.
So if the algebraic sum of the x and y forces acting on the body is 0, then the body is said to be in the translational equilibrium. So अगर बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम अगर 0 होगा तो उस स्टेट ऑफ बॉडी को जो है वो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन वो रोटेट कर रही है, सो उस केस में क्या वो इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो चेक करते हैं। सो ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर सम है फोर्सेस का किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही होती हैं उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, there is an example in which the body is present in the state of the translational equilibrium but not in a state of the rotational equilibrium, due to which we need the second condition of equilibrium. So in the first figure, the net forces acting on the system is 0 because both forces are equal in magnitude but opposite in direction, and since both of these two forces act along the same point, their line of action is similar or equal, due to which there will be no torque produced. ये दो forces जो कि equal magnitude की हैं लेकिन opposite direction की हैं, इस वजह से इस सिस्टम के ऊपर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी को रोटेट नहीं करवा सकेंगी क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन की हैं। लेकिन अगर दो फोर्सेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो इस केस में भी इनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो 0 ही है, लेकिन इनमें नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। और नेट टॉर्क 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सो इवन दो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों सिचुएशंस में वैलिड है, लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों में डिफरेंट है। मींस टॉर्क दोनों में डिफरेंट है। एक सिस्टम में टॉर्क जो है वो 0 है, लेकिन अगर आप लाइन ऑफ एक्शन चेंज करते हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में एग्जिस्ट कर रही है, और उसमें अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना नहीं कह सकते। सो इस वजह से हमें सेकंड कंडीशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है ताकि हम चेक कर सकें कि क्या बॉडी परफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं। सो द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज if the vector sum of all the torques acting on the body about an axis that must be equal to 0. So mathematically we can write down the summation of the torque must be acting on a body must be equal to 0. So for a system, if there are several forces acting on it, so their sum of the vector sum of all the torque must be equal to 0. It means the clockwise torque must be equal to anti-clockwise torque, क्योंकि जो rotations हैं वो दो ही तरह से हो सकती हैं, या तो वो clock की direction में होंगी जो कि clockwise torque कहलाती हैं, या वो clock की direction से opposite direction में होती हैं जिनको हम anti-clockwise torque का name देते हैं। So the clockwise torque must be equal to the anti-clockwise torque. So this is the second condition of equilibrium। और torque हमारे पास क्या है? Turning effect है force का, जो कि equal होता है moment arm, the product of the moment arm into the force. So when a sum of the torques acting on the body is 0, then the angular acceleration of the body is 0, and hence the body is said to be in the rotational equilibrium. अगर forces जो हैं वो 0 होंगी तब बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। अगर सम ऑफ टॉर्क 0 होगा तब हम ऐसी बॉडीज को जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में कह सकते हैं। But for a body to be in the complete equilibrium, the both of the conditions has to be fulfilled. If the first condition is satisfied, it means there is no linear acceleration, acceleration is 0, then it is said to be in the state of the translational equilibrium. But if
The second condition is satisfied. It means there is no angular acceleration. Then the body is said to be in the rotational equilibrium. But for a body to be in the complete equilibrium, both the conditions must be satisfied. The first condition, that is the sum of all the forces acting on a body must be equal to 0, and the second condition, that is the sum of all the torque acting on a body must be equal to 0. तभी हम उस बॉडी को complete equilibrium में, perfect equilibrium state में कह सकते हैं. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब है? जब हमारे पास नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 0 हो. इट मीन्स कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. तो ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये सिस्टम रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. और जो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगी? जब टॉर्क जो है वो 0 हो, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए. तभी जब आप उनको ऐड करोगे तो उनका सम 0 होगा, बिकॉज एक टॉर्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और दूसरे टॉर्क को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. लेकिन इस केस में नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, लेकिन टॉर्क जो है वो 0 है. तो अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम ऐसे सिस्टम को रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे, और अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ऐसे सिस्टम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहेंगे. लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी. अगर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो भी 0 हो और जो टॉर्क है वो भी 0 होगा, तब हम उस बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे. अदरवाइज it will be either in the translational equilibrium or it will be in the rotational equilibrium. So the sign conventions which we will use while solving the numerical questions will be, in case of the forces, we will relate these forces with the x and y coordinates. If the direction will be in the rightward direction, then it will be considered to be positive, since it will be in the positive x-axis direction. And if the force is towards the left direction, then it will be taken as negative, since due to the negative x-axis. If the force is in the upward direction, then it will again consider to be positive due to the positive y-axis. And if the force is in the downward direction, then it will be considered to be negative due to the negative y-axis. So sign conventions को आप simply जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है वो याद रख सकते हो कि अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो फोर्स पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो भी हम उस फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर वो नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी तो हम उन फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे. और अगर इन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, लाइक अगर वो कोई एंगल बनाएगी, तो उस एंगल के केस में हम उस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके जो है वो फर्दर यूज करेंगे. नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन जो कि टॉर्क की है, टॉर्क की इक्वेशन में हमारे पास जो रोटेशन है वो दो ही तरह से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी. क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्लॉक की नीडल की डायरेक्शन को कहा जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक की नीडल्स की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं. सो फॉर द केस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव while the clockwise torque is considered to be negative. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में हम clockwise torque को पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरे में हम clockwise को जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं. तो हम यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन जो है वो उनको डिफाइन कर देते हैं कि जो clockwise torque हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को जो है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. सो इन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें अपने न्यूमेरिकल्स को, अपनी इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है. So dear students, as you can see in these diagrams, the axis of rotation is taken perpendicular to the figure and it is represented by the red dot. So in the first figure, the body is present in the static equilibrium because in this case, the first condition is satisfied since the net force is 0. The two forces are acting in the upward direction and the downward force is equal to the sum of the upward forces. So as a result, the body will be present at rest and it has no tendency to start moving as a whole. While
The net torque about the axis is also equal to 0, so the body has no tendency to start rotating. So this body will be in a state of the static equilibrium. In case of the second figure, the body will has no tendency to accelerate, but it will start rotating. So the first condition is satisfied while the second condition is not satisfied. So as a result, this body will be said to be in a state of the translational equilibrium. And in the third case, the bodies will be in the state of, like, it will be rotating, so it has a tendency to accelerate, but as a whole it has no tendency to start rotating. So as a result, the first condition is not satisfied, but the second condition will be satisfied, as since the net torque about the axis will be equal to 0, since its moment arm is half as compared to the moment arm of the force F. So as a result, the two forces are in equal direction, in the same direction, but the torque will be 0 since the anti-clockwise torque and the clockwise torque is equal. So as a result, this body will be said to be in a state of the rotational equilibrium. So in this figure, you can see the three states of the equilibrium: the static equilibrium, the dynamic translational equilibrium, and the dynamic rotational equilibrium. Example 2.5 is Hina weighing 450 Newton is standing at the edge of the uniform diving board 5 meter in length. Weight of the board is 150 Newton and is bolted down at the left end while being supported 1.50 meter away by a fulcrum. Find the forces that the bolt and the fulcrum exert on the board. So सबसे पहला स्टेप जो है वो हम इसकी फ्री बॉडी जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे ताकि हम इजीली इसमें प्रेजेंट जो फोर्सेस हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकें. सो एक रफ सा हम यहाँ पे जो है स्केच है उसको यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. एक डाइविंग बोर्ड है हमारे पास और इस डाइविंग बोर्ड को जो है एक साइड से जो है वो बोल्ट अटैच्ड है जिसको आप स्क्रू भी कह सकते हो बट इन अ लार्ज साइज. सो यहाँ पे इस बोल्ट के ऊपर एक्सर्ट होने वाली फोर्स को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है. सो इसको हम एफ ऑफ बी का नेम दे देते हैं. इसके जो सेकंड एज है इस डाइविंग बोर्ड का वहाँ पे हिना जो है वो स्टैंड कर रही है और उसका जो वेट है वेट विल आल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो her weight will be in the downward direction which will be equals to 540 Newton. और ये जो लेंथ है इस बोल्ट से लेके हिना तक की that is equal to LH and it is equals to 5 meter. And then the fulcrum is present at the distance of 1.5 meter from the bolt. So from the bolt, the fulcrum और fulcrum हमारे पास क्या है मूविंग पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग जो है वो बॉडी रोटेट करेगी या आप इसका स्पॉट कह सकते हो जिसके अलोंग जो है ये बॉडी जो है वो रोटेट कर सके. सो फल्क्रम के ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको आप डाउनवर्ड भी कंसिडर कर सकते हो और अपवर्ड भी कंसिडर कर सकते हो. अगर फोर्सेस गिवन ना हो तो आप खुद से उन फोर्सेस की डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एट द एंड अगर आपकी फोर्सेस पॉजिटिव आएंगे इट मीन्स के जो आपने इनिशियल डायरेक्शंस कंसिडर की थी वो सही थी. अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो इट मीन्स के इनिशियल डायरेक्शंस आपकी जो है वो गलत थी, तो उनको आपने एक्चुअल के ऑपोजिट लेके चलना है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुक में डायग्राम गिवन है सो जो डायरेक्शंस उसमें गिवन है वही डायरेक्शंस मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. फल्क्रम के लिए जो फोर्स कंसिडर की गई है दैट इज इन द अपर डायरेक्शन, सो एफ ऑफ एफ, और ये फोर्स भी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. और बोल्ट से लेके फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज एल ऑफ एफ, इट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर. और उसके अलावा जो डाइविंग बोर्ड है उसका वेट जो है वो 150 न्यूटन है. और अगर बॉडी यूनिफॉर्म है
तो उस बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे एक्ट करता है। सो इस बोर्ड का जो सेंटर होगा वहां पे इसका वेट एक्ट करेगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। सो इसके सेंटर में होने का मतलब है कि एजेस से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे हम सेकंड जो है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये डिस्टेंस भी हमारे पास जो है वो 2.5 मीटर के इक्वल है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने दो फोर्सेस जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। एक फोर्स जो कि फल्क्रम के ऊपर एक्ट करेगी और एक फोर्स वो जो कि बोल्ट के ऊपर एक्ट करेगी। सो यहाँ से सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं। So according to the second condition of the equilibrium, the sum of all the torque acting on this system must be equal to 0. या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। और टॉर्क जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना होता है। और यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल्ट का पॉइंट भी ले सकते हैं, फल्क्रम भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सिस भी ले सकते हैं और वो पोजीशन भी ले सकते हैं जहाँ पे हिना स्टैंड कर रही है। लेकिन क्योंकि बोल्ट और फल्क्रम की जो फोर्सेस है वो हमें अननोन है, तो हम बोल्ट या फल्क्रम में से कोई एक पॉइंट जो है वो एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लेते हैं और उससे रिलेट करके हमने टॉर्क की जो इक्वेशन है उसको राइट डाउन करना है। क्योंकि जितना अननोन हम अपनी इक्वेशंस में यूज करेंगे उतना ही फिर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। सो लेट अस कंसिडर द बोल्ट पॉइंट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इस पॉइंट को मैं जो हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कंसिडर कर लेती हूँ। So if the bolt is the axis of rotation, then we have to write down the torque related to this bolt. So सबसे पहले जो यहाँ पे force है that is due to the force on the fulcrum, और ये force इस axis के along जो है वो anti clockwise direction में जो है वो इस बोर्ड को रोटेट करवाएगी अगर हम बाकी सब फोर्सेस को इस वक्त इग्नोर कर दें। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना था अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। सो द टॉर्क ड्यू टू द फल्क्रम विल बी पॉजिटिव। The second force is the force due to this center due to the weight of the board, और इस force की वजह से इस axis के along जो torque produce हो रहा है that is in the clockwise direction, and the clockwise torque will be considered to be negative, and the force due to the weight of the hinna that is also produce the torque in the clockwise direction, so it will also consider to be negative. So ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी। जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन की जो इक्वेशन है उसको राइट डाउन कर लिया। और टॉर्क जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का। सो जो फल्क्रम के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज एफ ऑफ एफ एंड द मोमेंट आर्म इज एल ऑफ एफ। अगर आप बोल्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो दैट इज एल ऑफ एफ विच इज 1.5 मीटर। दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड टू द torque produced by the center due to the weight of the board, that is the force acting along the center, and the distance from the bolt that will be LC which is 2.5 meter minus the weight of the hinna into the moment arm that is L of H. So this must be equal to 0. Now we will substitute the values and solve this equation for the force of the fulcrum. So सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। f of f will be equals to f of c. L of c इक्वेशन की दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्म्स को ले जाएंगे so they will become positive, और यहाँ पे हम L of f को जो है वो डिवाइड कर देंगे। so इसमें जब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे हाँ तो आपके पास जो आंसर आएगा फोर्स का दैट विल बी इक्वल्स टू 1750 न्यूटन।
and since this value is positive, so it means कि initially जो हमने fulcrum के ऊपर act होने वाली force की जो direction consider की थी, that is correct. So the force on the fulcrum will be produced in the upward direction and its magnitude will be equals to 1750 Newton. And now to find out the force that is exerted on the bolt, we will use the first condition of equilibrium along the y-axis only. So the first condition of equilibrium along the y-axis will be equal to the sum of all the forces acting along the y-axis must be equal to 0. क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये बॉडी ऑलरेडी जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं और उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं, जिनमें से 3 फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो हमें इन सब फोर्सेस को जो ऐड करना है. अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी. सो f of f minus f of b minus f of c minus f of h must be equal to 0, or f of b will be equal to f of f minus f of c minus f of h. यहाँ से जस्ट हमने f of b को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके हैं, तो ये पॉजिटिव हो गई है और बाकी फोर्सेस एज इट इज रहेंगी. और अगर आप इन सब फोर्सेस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, f of f हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 1750. f of b हमने कैलकुलेट करनी है, while f of c is 150 and f of h is 450. So इन वैल्यूज को अगर आप लोग 1750 से सब्ट्रैक्ट करोगे, then you will get 1150 Newton. So the force that is exerted on the ball, that is equal to 1150 Newton. And now dear students, you have to solve this example by taking the axis of rotation as the fulcrum. So now you will have to consider this fulcrum as the axis of rotation and then try to solve this example as your homework. Dear students, your homework for today is question number 1. Identify the state of equilibrium of the objects around you. Question number 2 is write down at least 5 examples each of dynamic translational equilibrium and dynamic rotational equilibrium. Question number 3 is Ali and his father sit at the ends of a seesaw 2 meters from the pivot as shown in figure. Where should Ali's mother sit in order to balance the seesaw? There is also an assignment 2.5 from your book as your homework. A uniform plank of weight 200 Newton and length 6 meters is supported by a rope as shown in the figure. If the breaking tension in the rope is 400 Newton, how far can a boy of weight 400 Newton walk towards the support? This is the end of today's lecture, and this is also the end of this unit. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed today's lecture. For any kind of queries, you can write your question in the comment section. See you in the next video with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.